Hey everyone, welcome back to our channel. In this particular lecture, we will cover wasteland and degraded land. We'll discuss some important points that has been asked in different competitive exam so that you will be more clarified about what wasteland is, what is degraded land, what are the different types of wasteland and different facts and figures like which state is having most of the wastelands, which state having most of the saline or salt affected areas, which organizations are involved in wasteland mapping, right? So in this lecture, we will cover all of these points. So what is basically wasteland? Wasteland is any land which has less productive potential, then which has inherent problems with them. So they are basically, wastelands are basically two types. One is cultivable wasteland, another is uncultivable wasteland, or there cannot be practice any type of cultivation in those. Those are uncultivable or non-cultivable wasteland. Then the cultivable wastelands are like zooming areas, saline prone areas, then waterlogged area. They can be cultivable with certain management practices, but uncultivable wastelands like rocky lands, then glacier or ice covered land, they cannot be cultivable, right? So we'll talk about all these type of wastelands in detail. If you are new to our channel, then subscribe to our channel because we have already uploaded more than 300 lectures, 300 conceptuals, a mock test series we are uploading. You can enjoy the lectures. You can get some informations from there, and you can prepare for your competitive examination, whatever for you are preparing. So subscribe to our channel, and if you have not joined our Telegram group, then join our Telegram group because we are posting different updates about our lectures, and we are posting different quizzes, different PDFs also there. And yes, well, let's dive into today's topic, that is wasteland and degraded lands. Our first question of this session is National Wasteland Development Board NWDB under Ministry of Forest and Environment was established in the year. NWDB under Ministry of Environment and Forest, it was established in the year. Options are 1974, 1985, 1988, 1992. The right answer is 1985. NWDB कब established हुआ था? 1985 में. 1985 में और कौन सी इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश हुआ था? जैसे क्रीडा, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1985. 1974 में केवीके एस्टेब्लिश हुआ था. आपको पता होगा केवीके जो कि कृषि विज्ञान केंद्र है, इसका इंग्लिश नेम है, दैट इज फार्म साइंस सेंटर. इट वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड एट पुडुचेरी अंडर TNAU. ओके, 1974 में केवीके एस्टेब्लिश हुआ था. देन 1974 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि पहले था CSWCRTI, एस्टेब्लिश हुआ था 1974 में. क्रीडा एस्टेब्लिश हुआ था 1985 में. देन NWDB भी एस्टेब्लिश हुआ है 1985 में. NWDB नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड, इट वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मेनली टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ डिग्रेडेड लैंड, रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजी एंड टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ fuel wood and fodder at national level. 1988 में NCMRWF नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग एस्टेब्लिश हुआ था 1988 में. नेक्स्ट क्वेश्चन, among all the states district having more than -% area under wasteland were identified for detailed mapping. The right answer is 15%. जितने भी स्टेट्स है उनमें से कोई भी डिस्ट्रिक्ट का अगर 15% से ज्यादा वेस्टलैंड है तो that was considered to be mapped detailed. Detailed mapping was done for that particular district. Next question, which among the following is not considered as wasteland? इनमें से किसको हम wasteland नहीं मानेंगे? Options are gullied and ravenous land, land of shifting cultivation, steep slope and snow covered land, none of the above. So ये सारे जितने भी है, these are considered as wasteland. So the right answer will be none. Wasteland में क्या क्या आता है? Gullied and ravenous land आता है, land without shrub, that is also considered as wasteland, waterlogged land or marshland, that is also known as wasteland, land of soil salinity or alkalinity, also known as wasteland, land of shifting cultivation, underutilized degraded notified forest land, degraded pasture or grazing land, degraded land of plantation crops, desertic sands or coastal sand, mining or industrial wasteland, barren land with rock or stony waste, steep sloping land, snow covered land. There are different types of wasteland, right? Next question, the total area under wasteland in India is, total area under wasteland in India is, options are 8.9 million hectare, 23.6 million hectare, 64 million hectare, 114 million hectare.
The right answer is 64 million hectare. Actually, this is 63.85 million hectare. Okay, so around 64 million hectare are under wasteland in India. टोटल अगर पूछा जाएगा कि टोटल वेस्टलैंड एंड डिग्रेडेड लैंड कितना है, देन द राइट आंसर विल बी 114 मिलियन हेक्टर. इनमें से 23.62 मिलियन हेक्टर जो है दैट इज प्रोन टू वाटर इरोजन एंड 8.89 मिलियन हेक्टर अंडर विंड इरोजन. नेक्स्ट क्वेश्चन, among different categories of wasteland maximum area shared by, among different categories of wasteland maximum area shared by, options are snow covered, degraded non-forest, barren rocky land, zoom land. The right answer is snow covered. टोटल वेस्टलैंड का कितना परसेंट, 31% जो है स्नो कवर्ड है. डिग्रेडेड नॉन फॉरेस्ट लैंड जो है दैट इज अराउंड 22% अराउंड जो है डिग्रेडेड नॉन फॉरेस्ट लैंड है. देन अराउंड 10% जो है 10% दैट इज अंडर बैरन रॉकी लैंड. ओके, मैक्सिमम एरिया शेयर्ड बाय स्नो कवर्ड एरिया दैट इज 31% अराउंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, the percentage distribution of golid land highest in the state. The percentage distribution of golid land highest in the state. ऑप्शंस आर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र. सो जितना भी गॉली एरिया है, गॉलिड लैंड एंड रावेनस लैंड जो है, टोटल इनमें से अराउंड 37% जो है मध्य प्रदेश में है. 37%. सो हाईएस्ट परसेंटेज अगर पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश में होगा. मध्य प्रदेश हाईएस्ट, देन 24% अराउंड राजस्थान 24%, देन यूपी अराउंड 14% जो है टोटल गॉली एरिया दैट इज फाउंड इन यूपी. महाराष्ट्र अराउंड 8%. ओके, सो हाईएस्ट गॉली एरिया जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है, देन राजस्थान में 24%, देन उत्तर प्रदेश में 14% एंड महाराष्ट्र में 8%. नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेट विथ रेस्पेक्ट टू एरिया अंडर वाटरलॉग्ड वेस्टलैंड. करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेट विथ रेस्पेक्ट टू एरिया अंडर वाटरलॉग्ड वेस्टलैंड. ऑप्शंस आर वेस्ट बंगाल ग्रेटर दैन आसाम ग्रेटर दैन उत्तर प्रदेश, गुजरात ग्रेटर दैन वेस्ट बंगाल ग्रेटर दैन यूपी, उत्तर प्रदेश ग्रेटर दैन गुजरात ग्रेटर दैन वेस्ट बंगाल, गुजरात ग्रेटर दैन वेस्ट बंगाल ग्रेटर दैन आसाम. जितना वाटरलॉग्ड एरिया है, वाटरलॉग्ड वेस्टलैंड जितने हैं उनमें से सबसे ज्यादा कहाँ पे है, यूपी में. ओके, यूपी में अराउंड 30%. ओके, जितना वाटरलॉग्ड एरिया है यूपी में अराउंड 30% स्प्रेडेड है. देन गुजरात में अराउंड 16% जो है गुजरात में, देन वेस्ट बंगाल में अराउंड 12% जो है वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है. राइट, देन आसाम की बात करेंगे तो वहाँ पे 10% अराउंड आ जाता है, आसाम में अराउंड 10%. सो द राइट ऑर्डर इज उत्तर प्रदेश हैविंग द हाईएस्ट एरिया अंडर वाटरलॉग्ड वेस्टलैंड, देन फॉलोड बाय गुजरात, then followed by West Bengal. Next question, the state having the highest percentage of salt affected area in India. The state having the highest percentage of salt affected area in India, that is Gujarat. Okay, that is Gujarat. Gujarat में around 38% टोटल जो salt affected area है उसका 38% गुजरात में पाया जाता है. Then यूपी 29% अराउंड यूपी में है, then followed by Rajasthan that is around 13%, followed by Tamil Nadu around 12%. So सबसे ज़्यादा salt affected area कौन से स्टेट में पाया जाता है, गुजरात में. Next question, the process which lowers current and future capacity of soil to produce goods and services called, the process which lowers current and future capacity of soil to produce goods and services that is known as सॉइल डिग्रेडेशन. सॉइल डिग्रेडेशन का ये डेफिनेशन है, इसको याद कर लेना. अगर कहीं पे लिखना हो, कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो, कहीं पे डेफिनेशन पूछा जाता है, तो दिस इज द डेफिनेशन फॉर सॉइल डिग्रेडेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेस्टलैंड एटलास ऑफ इंडिया हाईलाइटिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेस्टलैंड, देयर नेचर एंड एक्सटेंट वाज प्रपोज्ड बाय. द वेस्टलैंड एटलास ऑफ इंडिया highlighting different forms of wasteland, their nature and extent was proposed by, options are ICR, Ministry of Agriculture, National Wasteland Development Board, National Remote Sensing Center, NRSC. The right answer is NRSC, National Remote Sensing Center, prepared the Wasteland Atlas of India highlighting the different forms of wasteland, their nature and extent. So NRSC कहाँ पे है, हैदराबाद में. इन्होंने क्या करते हैं, इन्होंने रिमोट सेंसिंग का हेल्प लेके वेस्टलैंड का एटलस डेवलप किए थे.
एंड वेस्टलैंड मैपिंग भी करते हैं NRSC। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है दे आर ऑल्सो मैपिंग द वेस्टलैंड एरिया ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन? इनमें से कौन सी नॉट ए कॉज ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन? ऑप्शन आर रिमूवल ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, अनरेगुलेटेड ग्रेजिंग, afforestation, over exploitation of land. The right answer is afforestation. Afforestation means we are growing new crops or we are trying to develop a forest, development of forest, that is known as afforestation. So afforestation will help in soil degradation, will help to reclaim or to control soil degradation, but it will not cause soil degradation. अगर इसमें यहाँ पे ऑप्शन था डी होता डिफॉरेस्टेशन, ओके, डिफॉरेस्टेशन यानी जो वुड्स है उसको कट करना, दैट इज डिफॉरेस्टेशन. सो दैट इज increasing the soil degradation, but afforestation will help to prevent soil degradation. Then all other options are like removal of natural vegetation, unregulated grazing, over exploitation land, they will cause soil degradation, right? Next question, in India the average rate of soil erosion is, in India the average rate of soil erosion is, options are 11 ton per hectare per year, 16 ton per hectare per year, 23 ton per hectare per year, 33 ton per hectare per year. The right answer is 16 ton per hectare per year. Total average rate of soil erosion in India is 16 ton per hectare per year. But the permissible soil erosion rate, that is 11 ton per hectare per year. Okay, India में जो average है that is 16 ton per hectare per year, that is way more than the permissible limit, right? So we have to take different conservation measures. Next question, the largest area covered by acidic soil in India covered by dash soil group. Okay, जितना भी acidic soil है इंडिया में उसमें कौन सी soil group जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है? Options are alluvial soil, black soil, lateritic soil, desert soil. The right answer is lateritic soil. Lateritic soil जो है, जितने acidic soil है इंडिया में उसमें सबसे ज़्यादा lateritic soil पाया जाता है. देन अगर पूछा जाएगा कि जितना रेनफेड या फिर ड्राईलैंड है वहाँ पे कौन सी सॉइल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, देन द राइट आंसर विल बी एलुवियल सॉइल. अगेन अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जितने भी ड्राईलैंड या फिर रेनफेड एरिया है उसमें कौन सी सॉइल इज सुइटेबल फॉर क्रॉप कल्टिवेशन, दैट इज ब्लैक सॉइल, क्योंकि इसमें मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है, ज़्यादा लंबे समय तक इसमें मॉइस्चर होल्ड हो सकता है एंड इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू जो उसका फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी लेवल है ब्लैक सॉइल का अच्छा होता है. So that will be the most appropriate answer if the question will be like which among the following is most suitable in dryland condition, then the right answer will be black soil. And if the question will be which among the following soil group is found the maximum in dryland area, then the right answer will be alluvial soil. And here the right answer is lateritic soil. Next question, according to National Wasteland Development Board, which among the following has not been classified as cultivable wasteland? According to NWDB, which among the following has not been classified as cultivable wasteland? So there are two types of wasteland. According to National Wasteland Development Board, there are two types of wasteland. They are been classified like cultivable wasteland, then uncultivable wasteland. Cultivable wasteland में क्या क्या आता है? Gullied or ravenous land, undulating land without shrub, surface waterlogging and marshland, salt affected land, shifting cultivation area, degraded forest land, degraded pasture or grazing land, degraded forest plantation, strip land, sand dune, mining or industrial wasteland. These are considered as cultivable wasteland. Then uncultivable wasteland, these are like brown, rocky, stony or stony area, जितने भी rocky या stony area है, that is uncultivable wasteland. Then steep slopey area, that is also uncultivable wasteland. Then snow covered or glacier land, these are also uncultivable wasteland. Cultivable wasteland जो है उसको कुछ certain measure लेके हम वहाँ पे cultivate कर सकते हैं crops को, लेकिन uncultivable wasteland they cannot be used for vegetation. So the right answer here will be glacier land. Okay, these are uncultivable wasteland, but all these like salt affected industrial wasteland, shifting cultivation land, these are cultivable wasteland. Next question, the area of wasteland is maximum in which of the following state? The area of wasteland that is maximum in which of the following state?
द राइट आंसर विल बी जम्मू एंड कश्मीर। सो हम लोग बात किए थे कौन सी टाइप का वेस्टलैंड सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो दैट इज ग्लेशियर और जहाँ पे स्नो कवर्ड लैंड होते हैं, दैट टाइप ऑफ वेस्टलैंड इज फाउंड मैक्सिमम, द शेयर इज मैक्सिमम। सो जम्मू कश्मीर आपको पता है कि हायर ऑल्टीट्यूड में है एंड यहाँ पे बर्फ और ग्लेशियर डिपॉजिट होते हैं। सो दे आर द मैक्सिमम वेस्टलैंड इज फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which organization mapped soil degradation in India on 1:4 million scale based on GLASOD guideline? The options are NBSS and LUP, Ministry of Agriculture, NRSC, NWDB. The right answer is NBSS and LUP, National Bureau of Soil Survey and Land Use Planning. ये कहाँ पे है? इसके हेडक्वार्टर जो है ये नागपुर में है, इसके हेडक्वार्टर नागपुर में है। एंड देयर आर नेशनल ब्यूरो, कितने नंबर ऑफ नेशनल ब्यूरोज है इंडिया में? 6 नेशनल ब्यूरोज, टोटल नंबर ऑफ नेशनल ब्यूरोज आर 6। सो इन्होंने क्या किए थे, एनबीएसएस एंड एलयूपी ने सॉइल डिग्रेडेशन मैपिंग किए थे ऑन बेसिस ऑफ 1:4 million स्केल अकॉर्डिंग टू ग्लासोड गाइडलाइन। ओके, सो देयर आर डिफरेंट एजेंसीज दे हैव असेस्ड लैंड डिग्रेडेशन। व्हाट आर दे? नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, देन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, the soil and water conservation division of Ministry of Agriculture, then Society for Promotion of Wasteland Development, then NRSA, National Remote Sensing Agency, that is renamed as NRSC, NBSS and LUP, then Department of Environment, National Wasteland Development Board. These are certain agencies, they map degraded land and they estimate wasteland of India. So NBSS and LUP ने 1994 में 1:4 million स्केल में अकॉर्डिंग टू ग्लासोड गाइडलाइन इन्होंने क्या किए थे, एस्टिमेट किए थे वेस्टलैंड, टोटल डिग्रेडेड लैंड ऑफ इंडिया, दैट इज दे हैव एस्टिमेटेड एज 187 million हेक्टर। ओके, 187 million हेक्टर कब एस्टिमेट किए थे? 1994 में। देन अगेन रिवाइज एस्टिमेशन किए थे 1:1 million स्केल में, रिवाइज एस्टिमेशन इन 2004 में रिवाइज एस्टिमेशन किए थे 1:1 million स्केल में, एंड दे फाउंड दैट वेस्टलैंड इज 146.8 million हेक्टर। ओके, सो जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हो डेटा जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, दैट वाज यू कैन फाइंड डिफरेंट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एजेंसीज, लाइक दिस वाज बाय NBSS एंड LUP। देन NWDB इन्होंने एस्टेब्लिश किए थे कि टोटल 121 million हेक्टर जो है टोटल वेस्टलैंड एंड डिग्रेडेड लैंड है, एंड टोटल उसमें से फिर 63 या 64 million हेक्टर जो है वेस्टलैंड है उनमें से। सो अकॉर्डिंग टू देम ऑल ऑफ दीज एजेंसी दे यूजुअली assess the degraded and wastelands, so their report actually varies. Next question, which among the following is the major cause of salinization and waterlogging in agriculture? इनमें से कौन सी that is major cause of salinization and waterlogging in agriculture? Options are deforestation, soil erosion, improper irrigation, use of fertilizer. The right answer is improper irrigation. अगर irrigation हम improper करेंगे तो वाटर लॉगिंग हो सकता है। देन अगर इरिगेशन जो हम कर रहे हैं that water contains different types of salt and that is not salt free या फिर that is not a quality water, then that water can develop salinization. then अगर हम ज़्यादा ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं then also it will result in salinization अगर वो that water contain more salt. देन अगर हम प्रॉपर लाइनिंग नहीं कर रहे हैं, जो भी हम कैनल एरिया में इरिगेशन कर रहे हैं प्रॉपर लाइनिंग नहीं कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम आ सकता है, सैलिनाइजेशन का प्रॉब्लम आ सकता है दैट्स इन दैट सॉइल। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। विंड एंड वाटर इरोजन क्लासिफाइड अंडर डैश टाइप ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन, राइट? सो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल डिग्रेडेशन 3 टाइप का होता है। वन इज फिजिकल डिग्रेडेशन, देन वन अदर इज केमिकल डिग्रेडेशन, अनदर इज बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन। फिजिकल डिग्रेडेशन में फिर आ जाता है कॉम्पैक्शन एंड हार्ड सेटिंग, लैक्टराइजेशन, इरोजन, डिप्लीशन। इनमें फिर विंड इरोजन एंड वाटर इरोजन कम्स अंडर फिजिकल डिग्रेडेशन। ओके, फिजिकल लैंड डिग्रेडेशन में विंड इरोजन एंड वाटर इरोजन कमिंग। सो केमिकल डिग्रेडेशन में हमारा फर्टिलिटी इम्बैलेंस हो गया। देन एलिमेंटल डिग्रेडेशन आ जाता है जैसे कि एसिडिफिकेशन, सोडिफिकेशन, टॉक्सिक कंपाउंड, हेवी मेटल कंटामिनेशन।
these are comes under chemical degradation. Then biological degradation में decline in soil organic matter, then reduction in macro and microfauna, this comes under biological degradation. So there are basically 3 types of soil degradation. Next question, decrease in soil depth, organic matter and soil fertility are categorized under dash type of desertification indicator. There are different types of desertification indicators. So उनमें से अगर हम देखेंगे soil depth decrease होना या फिर organic matter decrease करना, then soil fertility decrease करना, this comes under physical indicators. So there are different types of indicators. What are they? Physical indicators, biological indicators, then socio or economic indicator. Physical indicators में जो आते हैं indications, they are decrease in soil depth, decrease in soil organic matter, decrease in soil fertility, soil crust formation or compaction, appearance, increase in frequency, severity of dust storm, sandstorm, salinization or alkalinization, decline in quality and quantity of groundwater, ground and surface water, increased seasonality of springs and small streams, alteration in relative reflectance of land, albedo, change in albedo, etc. बायोलॉजिकल इंडिकेशन में आ जाता है वेजिटेशन, डिक्रीज इन कवर, डिक्रीज इन अबव ग्राउंड बायोमास, डिक्रीज इन यील्ड, ऑल्टरेशन की ऑफ स्पेसीज डिस्ट्रीब्यूशन, failure of species to reproduce successfully. This comes under biological indicators. Then social or economic indication में आता है change in land use or water use, change in settlement pattern, like abandonment of villages, and change in population, like demographic evidence, migration statistics, public health information. This comes under socio-economic indicator of desertification. So these indicators you have to look into. Next question, a final question of this session. Which among the following is a corrective measures taken for desertification? इनमें से कौन सी we can take as a corrective measure for desertification? Options are afforestation, windbreak or shelter belt, amendments, application in problem soil, all of the above. The right answer will be all of the above. So afforestation कहाँ पे करेंगे? हर जगह जहाँ पे भी डेजर्टिफिकेशन हो रहा है या फिर वेस्टलैंड डेवलप हो रहा है वहाँ पे हम afforestation कर सकते हैं उसको रिक्लेम करने के लिए. देन विंड ब्रेक, शेल्टर बेल्ट, जहाँ पे हमारा विंड इरोजन होता है वहाँ पे प्रिवेंट करने के लिए हम विंड ब्रेक एंड शेल्टर बेल्ट कर सकते हैं. देन अमेंडमेंट्स ऑफ एप्लीकेशन इन प्रॉब्लम सॉइल, लाइक हम लाइम एप्लीकेशन करते हैं इन एसिड सॉइल, देन जिप्सम अप्लाई करते हैं इन सोडिक सॉइल टू रिक्लेम सोडिक सॉइल. सो दिस थिंग्स ऑल्सो कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट डेजर्टिफिकेशन. All these options are correct. So students, this was all about wasteland and degraded land. I have discussed some of the most important questions. They are being asked in different competitive exams from wasteland and degraded land. The data what we have discussed, they are varied according to different organization and their report. So you can check them, you can cross check them, and I don't think they are they must be almost similar. Then some minor correction if it is possible, then you can find out them. So if you are enjoying our lecture, then just subscribe to our channel and you just join our Telegram group so that you will never miss beautiful lectures like this. So yep, subscribe to our channel and join our Telegram group. See you in the next lecture. Till then, bye bye, have a great day.